नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी पर रेड का दिल्ली में विरोध, ममता बनर्जी पर फाइल ले लेने के आरोप। गुजरात के सोमनाथ में भव्य स्वाभिमान पर्व, साधु संतों की निकली डमरू यात्रा। और वडोदरा में नाबालिग से सामूहिक रेप, दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल प्रमुख के ठिकानों पर ईडी की रेड के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली से कोलकाता तक प्रदर्शन तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेंगी के नारे लगाए। दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ दिया। महुआ ने कहा, देखिए चुने गए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इस कार्यवाही के बाद ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, मैं हमारे सांसदों के साथ किए गए शर्मनाक बर्ताव की कड़ी निंदा करती हूँ। गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़कों पर घसीटना कानून लागू करना नहीं है, ये वर्दी में घमंड है। गुजरात के गिर सोमनाथ के पवित्र प्रभास तीर्थ में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अनुक्रम में साधु संतों की भव्य डमरू यात्रा निकाली गई। गुजरात के सोमनाथ के पटांगण में साधु संतों द्वारा ऐतिहासिक डमरू यात्रा निकाली गई। साधु संतों के हाथों में ध्वजा, सिर पर भगवा वस्त्र और बम बम भोलेनाथ की ध्वनि के साथ साधु संतों द्वारा वीरतापूर्ण यात्रा निकाली गई। सोमनाथ में इस यात्रा में शामिल होने देश भर और गुजरात राज्य से साधु संत उमड़ पड़े। साधु संतों के इस यात्रा से पूरा सोमनाथ शहर अलौकिक नजर आ रहा था। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जे अपना भारतना यशस्वी वडाप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी जे 1026 ની અંદર જ્યારે સોમનાથ ઉપર મોહમ્મદ ગજનીએ આક્રમણ કર્યું હતું એને આજે 1000 વર્ષ પૂરા થયા અને પૂર્ણ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ સોમનાથનું થયું એને 75 વર્ષ થયા। તો આજે ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન એક મોટું આયોજન જે એક આપણે સનાતન ધર્મ હિન્દુ સમાજ જેના ઉપર ગૌરવ કરે એવું આજે એક આયોજન જે સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ નામ નાખ્યું છે। એની અંદર શ્રીપંત દશનામ જૂના અખાડા, આવાન અખાડા, અગ્નિ અખાડા ત્રણેય અખાડા જોડાઈ કરીને હમણાં એક ડમરૂ યાત્રા અને સાંજે 5 વાગે એક અમારી રવાડી જે અમે કુંભમાં કાઢીએ છીએ એના પછી ગિરનારમાં કાઢીએ છીએ અને આજે પ્રથમ વખત ગુજરાતમાં જો બીજી રવાડી નીકળી હોય તો સોમનાથ છે। એના સિવાય ક્યારેય નાગા સાધુએ રવાડી કાઢી નથી અને આજે સાંજે 5 વાગે પાછી રવેડી અને સાધુ સંતોની એક શોભાયાત્રા નીકળશે અને અમે વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી એના ઉપર અમે ગૌરવ કરીએ છીએ કે જે અમારી સનાતન ધરોહર, અમારો સનાતન ધર્મ અને અમારો સોમનાથ મહાદેવ જેની એક આજે પૂજા અર્ચના કરી સાધુ સંતો પણ એની ધન્યતા અનુભવશે। સોમનાથની સ્વાભિમાન પર્વની આ પવિત્ર ધરતી ઉપર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત।
આજે ગૌરવની વાત એ છે કે શૌર્ય યાત્રા વીર હમીરજી ગોહિલથી લઈ જેણે જેણે ધર્મ માટે માથા મૂક્યા એની એક યાત્રા, અદ્ભુત યાત્રા, દળ ધીંગાણે જેના માથા મહાણે એનો પાળીઓ બનીને પૂજાવું, ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થવું અને જગતના નાથને જગતના બાપને જેથી જરૂર પડી હતી તેથી લીલા માથાના બલિદાન જેણે આપ્યા હતા એવા શૂરવીરોની શૌર્ય યાત્રા જેને કહી શકાય। गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने हड़कंप मचा दिया। गुजरात के वडोदरा के फतेहगंज इलाके में 15 साल की लड़की के साथ गैंग रेप की गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि 2 लड़के लड़की को जबरन कमरे में ले गए और करीब 3 घंटे तक उसके साथ रेप किया। पीड़िता के घर पहुंचने के बाद परिवार ने घटना की जानकारी फतेहगंज पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए एसएसजी अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले भी नाबालिगों के साथ वडोदरा में रेप की घटनाएं घटती रही है, जिसके चलते पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है। नाबालिग पीड़िता के परिवार ने आरोपियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। इस मामले वडोदरा के जोन 1 के डीसीपी डॉक्टर जगदीश चावड़ा ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज रोज नवायार्ड विस्तार में जो फतेहगंज पुलिस स्टेशन विस्तार में आवेलो छे त्यां एक दीकरी उमर वर्ष 15 एनी उपर बलात्कारनी फरियाद ए दीकरीनी माता द्वारा आपवामां आवेली छे। ए अनुसंधाने पुलिसे एना माता पिता ने बोलावी व्यवस्थित पूछपरछ करी अने फरियाद दाखल करी छे। फरियादमां एनी माता ने एमने 2 आरोपीना नाम लखाव्या छे। ए बंने आरोपी जे छे एमने फतेहगंज पुलिस स्टेशन द्वारा हाल राउंड अप करी देवामां आव्या छे। आगळनी तपास चालू करवामां आवशे। अत्यारे फरियादमां जे बतावेला छे ए टोटल 2 आरोपी छे अने बंने आरोपीने प्रथम एक आरोपीने पकड्यो अने एना लगभग कलाक 1.5 कलाक पछी पोलीसे अलग अलग विविध टीमों बनावी अने मारी एलसीबी अने फतेहगंजना डिस्टाफ द्वारा बीजा आरोपीने पण राउंड अप करीने लाववामां आव्या छे। दीकरीનું અત્યારે મેડિકલ જે છે કરાવવામાં આવી રહ્યું છે। આગળના પુરાવો એકત્ર કરી અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આઈપીસી 376 અંતર્ગત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। अन्य જે કંઈ ફરિયાદના કન્ટેન્ટ છે અને પુરાવા મળશે એમાં આગળ ઉપર કલમોનો ઉમેરો કરી અને ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે। आज बड़ौदा शहर में दोपहर 1 बजे की घटना है। एक नाबालिग लड़की घर से बाहर निकली थी तो उसका एक दुकान पे खड़ी उसने वस्तु ली। 3 से 4 लड़के वो लड़की को बेला पुष्पा के एक घर में उसको बंद कर लिया। समझने वाली बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में एक दोपहर में रेप हो रहा है, गैंग रेप, वो भी एक नाबालिग बच्ची के साथ। ये चाहे किसी कम्युनिटी की लड़की, हमारी जिस बच्ची के साथ अगर रेप होता है वो हमारी बच्ची है। हिंदुस्तान में किसी बच्ची के साथ भी रेप होगा वो हमारी बच्ची है। आप खुद समझिए कि 1 बजे दोपहर में लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 4 लड़के कर रहे हैं, उसके साथ रेप कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं। बाहर से कुंडी लगी हुई है, उसके माँ बाप बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं उस लड़की को। जब उनको वहाँ मैं तो वो जिस जगह पे इस रेप की घटना हुई है उसके बाजू वाला जो पड़ोसी है लेडीज है, उसको भगवान 100 वर्ष की उम्र दे और ऐसे लोग हिंदुस्तान में और अधिक हों जिससे इन घटनाओं पे कुछ कमियां हों। उस औरत ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि एक लड़की के साथ 3 से 4 लड़के उसके पड़ोसी थे, गलत काम कर रहे हैं। जब वहाँ पब्लिक भेगी गई, ये लोग उसके माँ बाप भी ढूंढते गए तो उसी बेचारी औरत ने, पड़ोसी है ये दूसरी कौम के, वो एक हिंदू महिला होकर उसने ही पुलिस को जान की है। मेरे समझ से, जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, उसने कहा कि ये गलत हुआ है, उसके लिए पब्लिक भेगी हुई। आज हमारा पूरा हर कम्युनिटी का बंदा यहाँ पे खड़ा है एसएसजी हॉस्पिटल के अंदर। आप एक समझिए, एक नाबालिग लड़की 15 साल की, वो भी थोड़ा दिमाग से हल्का, उसको दिमाग से कम है, लड़की जो है दिमाग से हल्की कम है। 15 साल की लड़की के साथ दोपहर में 1 बजे रेप हो रहा है, वो भी गैंग रेप। तो हम लोग किस सदी में जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? आए दिन घटनाएं होती हैं कि मैंने ये तो सुना कि रात में गैंग रेप हुआ, कई बच्ची अकेली घूम रही थी या किसी के साथ जा रही थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। लेकिन गुजरात बड़ौदा शहर के अंदर दोपहर 1 बजे रेप हो रहा है,
तो आप समझिए कितनी भयावह स्थिति होगी हमारे बड़ौदा शहर की। हमारी सिर्फ और ये पब्लिक जितनी खड़ी, इनकी एक ही मांग है, ये जो भी दोषी है इनको फांसी की सजा, कम से कम फांसी की सजा तो होना चाहिए। इतनी हमारी सरकार से, प्रशासन से सबसे विनती करके हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इनको फांसी की सजा होना चाहिए और इनको एक गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक सबक मिले कि ऐसा कांड किसी की बच्ची के साथ ना हो। આજે 10 થી 10:30-11 વાગ્યાનું સવારનો એક કિસ્સો છે કે છોકરી એક દુકાન ઉપર ગઈ હતી અને જે છોકરાઓ હતા બાજુમાં કઈ આગળ બેસેલા હતા તો એ છોકરીને બૂમ પાડીને બોલાવીને અને પછી એક રૂમમાં લઈ જઈને અંદરથી લોક મારી લીધું અને 3-4 કલાક એમને બંધ રાખ્યો। એ છોકરી કે છે એ વસ્તુ કે ભાઈ આવું થયું છે। તો પછી અમે લોકો ભેગા થયા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર જેટલા પણ લોકો હતા તો પોલીસવાળા અમને કઈ વાત કરવા દેતા હતા નહીં અને પછી અમને પૂછે છે કે શું થયું છે, તમને શું લાગે છે એમના સાથે શું થયું છે। તો એ પોલીસનો વિષય છે કે ભાઈ અંદર રૂમમાં શું થયું છે એ તમે તપાસ કરો, એમના ટેસ્ટ કરાવો, મેડિકલ કરાવો। એ લોકો કશું કરતા નહીં હતા। પછી બધા સમાજના લોકો ત્યાં ભેગા થયા। પછી એ લોકો ઉપરના જે આલા અધિકારીઓ હતા એ લોકો ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ભેગા થયા। પછી એ લોકોએ છોકરી જોડે વાત કરી, પછી છોકરીનો જે કેવું હતું એ સાંભળ્યો, પછી એમને એ લોકોએ બધા મળીને અહીં મોકલ્યો છે અને અત્યારે તપાસ ચાલે છે। આગળ જોઈએ શું થાય છે શું નહીં। नहीं, ये 10 बजे के बाद एक छोकरी मेरी गई तो उधर से आ रही थी एक पहचान वाले के यहाँ, उधर से आ रही थी वापस में, तो इसने बुड्ढी ने तो बुलाया और बुलाने के बाद उसको मान लिया कि तेरे को रूम चाहिए। उसने कि रूम हाँ ढूंढ रहा था, तो तुझे रूम मिल जाएगा। तो उसने अंदर से उसको बुला के वो 2 छोकरे अंदर से उसने उसमें कड़ी मार दी। कड़ी मारने के बाद फिर उससे मान लिया जो भी इन्होंने रेप वगैरह जो भी करा उसके लड़की के साथ, ये टेंकरे के पास की बात है, नवाया। मेरी मांग है, मेरी तो एक तो पहली बार कंप्लेन नहीं लिखी कितनी देर, जब मेरा परार है मेरा छोकरा था तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। जब मैं आया तब हमने ये सब लोग जमा हुए तब हमने कि हमारी कंप्लेन लिखो, तब कंप्लेन हमारी लिखी गई। गुजरात के वडोदरा शहर में जेप्टो के कर्मचारी ने स्टोर मैनेजर पर शोषण के आरोप लगाते हुए स्टोर के बाहर धरना दिया। वडोदरा शहर के भाईली इलाके में जेप्टो का ग्रोसरी स्टोर है, जहां काम करने वाले कर्मचारियों ने बीती रात स्टोर के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित शोषण और बुरे बर्ताव का विरोध करने के लिए कर्मचारियों को मीडिया का सहारा लेना पड़ा। इन कर्मचारियों ने जेप्टो ग्रोसरी स्टोर के मैनेजर गुलाम शेख पर कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों से गाली गलौज की जाती है और बिना बात का दबाव बनाया जाता है। મારું નામ અમીન કશિશ છે। હું છેલ્લા 1 વર્ષથી જેપ્ટોમાં વર્કિંગ કરતી હતી। હું પહેલાં એસોસિએટમાં લાગી હતી, પછી હું સ્ટોર શિફ્ટ ઇન્ચાર્જમાં લાગી હતી। પહેલાં અમારા જે મેનેજર હતા એ સારા હતા। આ મેનેજર જ્યારથી અહીં આગળ એમનું થયું છે, પિંક સ્ટોર છે પણ એની જગ્યાએ મેનેજરમાં મેનને રાખ્યો છે। આવું પિંક સ્ટોરમાં તમે મેનેજરને મેન રખાય જ ના, તો બી એ રાખ્યો છે। અને મેં પછી ત્યાંથી એમના 1 દિવસની રજા માટે મારા જોડે ઝઘડો કર્યો હતો અને મને નોકરીથી કાઢી હતી। એના પછી મેં રાઇડરમાં આવવા માટે કર્યું તો મને કે રાઇડરમાં તારી આઈડી ચાલુ નહીં કરવાની, રાઇડરમાં આઈડી ચાલુ કરીશ તો હું તને અહીંથી ઘરે નહીં જવા દઉં। અને આવી રીતે છે ને અંદર બી હેરાન જ ગતિ કરતા હતા અને પછી મેં હેરાન ગતિને લીધે ત્યાંથી જતી। गौरतलब है कि स्टोर में कुछ महिला कर्मचारी भी काम करती हैं। कर्मचारियों के मुताबिक मैनेजर का कहना है कि स्टोर के बाहर बैठे कर्मचारी महिलाओं को गलत नज़र से देखते हैं, जबकि असलियत ये है कि डिलीवरी बॉय को ऑर्डर लेने के लिए स्टोर के पास बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। इस पूरे मामले में कर्मचारियों ने एकजुट होकर स्टोर मैनेजर गुलाम शेख को फौरन सस्पेंड करने की और कर्मचारियों के साथ इंसाफ करने की मांग की है। 150 રાઇડરો અહીંયા કામ કરે છે। ઝેપ્ટો સ્ટોર છે। હવે 5 બહેનો અમારે અહીંયા કામ કરે છે। અંદરથી મેઇન DHM એવું કહે છે 100 રાઇડરને કે તમે અંદરની છોકરીઓને હેરાન કરો છો, બરાબર। હવે આ પિંક સ્ટોર છે, છોકરાઓ બહાર રાઇડર જે છે અમારા એ અંદર તકલીફ એટલી બધી વેઠી રહ્યા છે ને કે એ લોકો એવું કહે છે કે આઈડી બંધ કરી નાખીશું। આ 5 બહેન અમારા અહીંયા 9 મહિનાથી સેફલી કામ કરે છે। સેફલી કામમાં એમને કોઈ જાતનું હેરેસમેન્ટ કોઈ રાઇડર તરફથી થયું હોય તો એમને તમે લાઈવ પૂછી લો કે કઈ જાતની તમને કઈ તકલીફ પડી છે કે કશું થયું છે। એ અંદરથી એવું પ્રૂફ વગર આજે કેરેટો મૂકી દે છે, અહીં કરે છે, ગાડીઓ અહીં મૂકવાની, પેલી બાજુ બેસવાનું, આમ કરવાનું, બધા રાઇડરોને માનસિક ટોર્ચર આપે છે। હવે આજે તમે આ બધા રાઇડર ઊભા છે અહીંયા, એમને પૂછી લો કે અંદર જાતનું કેટલું હેરેસમેન્ટ। આ મેડમ અંદર કામ કરતા હતા, SI મેડમ હતા, અંદર DHM એટલું બધું હેરાનગતિ કરે છે કે એમને નોકરી છોડવી પડી।
फिलहाल इस घटना के बारे में जेप्टो कंपनी की ओर से कोई ऑफिशियल जवाब नहीं मिला है। उनसे संपर्क करने की कोशिश करने पर उन्होंने आधिकारिक रूप से मेल करने के बाद ही जवाब देने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की, जिसके चलते ये समूचा मामला चर्चा का विषय बन गया है। હવે હું અહીંયા લાસ્ટ 2 મંથથી ઉપર થઈ ગયા અને એઝ અ સિંગલ મધર રહું છું. હું મારી સિસ્ટર ને બીજા 2-3 બહેનો બી છે. અમે લોકો અહીંયા બધા સાથે મળીને ભાઈ બહેનની જેમ જ બધા કામ કરીને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, ઇવન મને એક પ્રોબ્લેમ થયો હતો કસ્ટમર તરફથી, બધા સાથે ઊભા થઈ ગયા હતા મારા સપોર્ટમાં કે આ વસ્તુ બની નથી તો પણ કરી મેં અંદર રિક્વેસ્ટ કરી કે આ વસ્તુ આવું થયું છે. એના પછી પ્રોડક્ટ મારા ઓર્ડરમાં આવેલી તૂટેલી હતી, એમાં બી એમણે એટલું હેરાન કર્યા, બીજા ભાઈના રાઇડરના પૈસા કાપી લીધા, ઉપરથી પ્રોડક્ટ નહોતા આપતા. 1 વીક સુધી હેરાન કરી નાખ્યા અમને લોકોને. જ્યારે એ લોકો પિક કરે છે ઓર્ડર ત્યારે ચેક કરતા નથી અને અમને આપી દે છે. અમે તો ગણીને લઈ જવાની જવાબદારી બી અમારી છે. એ લોકો પિક કરે છે, ગણતા બી નથી, આડેધડ આપી દે છે. પછી અમે અંદર કમ્પ્લેન નાખીએ છીએ તો એ લોકો અમને બધાને જ લડે છે કે તમારા રાઇડરની જ ભૂલ છે. અંદર જે લોકો કામ કરે છે એમને કશું કહેતા પણ નથી. અને આજે બી સેમ વસ્તુ બની છે. આટલા બધા રાઇડરમાંથી એક બી વ્યક્તિ એવું નહીં કે કોઈ છોકરીને હેરાન કરે એવું. અમે તો નથી જ જોયું. 2-3 મહિના થઈ ગયા છે. અમે ઇવન અમારા છોકરાઓ પણ અહીંયા હોય છે તો બી એ લોકો સાચવી લે છે. અમે ઓર્ડર મારવા જઈએ છીએ તો અમારા છોકરાઓને બી સાચવી લે છે. એટલે આજે જે બી એ લોકો ઉપર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે તદ્દન ખોટા છે. અને આજે સરની વાત થઈ રહી છે ને, એ સરે તો હું પણ નવી આવી ત્યારે મને બી બહુ હેરાન કરેલી છે અને મને કોઈ રાઈટ આન્સર આપ્યો જ નથી. અને આજે બી એ વસ્તુ બની ચૂકી છે. એટલે હવે આના ખિલાફ કડક કાર્યવાही કરવી જોઈએ એવી અમારી લોકોની માંગ છે. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 नाइट का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 नाइट 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 नाइट पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 नाइट। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 नाइट। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd फेज, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत। आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में नॉनवेज डिलीवरी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री और डिलीवरी पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। ये आदेश होटल्स, गेस्ट हाउसेस, होम स्टे के साथ साथ ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी लागू होने की बात सहायक खाद्य आयुक्त मानिक
चंद्र सिंह ने कही है। जो भी प्रकरण आया है वह एक प्रकरण ये था कि अयोध्या धाम में कुछ श्रद्धालुओं द्वारा वह स्विगी जोमेटो से जो है नॉनवेज मंगाए जा रहे हैं। इसके क्रम में हमारे द्वारा ये कहा गया था कि क्योंकि स्विगी जोमेटो वह इंटरनेशनल संस्था है, उन पे तो हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन उनका एक टाइड अप होता है हमारे यहाँ होटल रेस्टोरेंट से। हम होटल रेस्टोरेंट से यह रिक्वेस्ट करेंगे कि वह जो है खास तौर से उन स्विगी जोमेटो को उस डिलीवरी को कभी न लें जो अयोध्या धाम के लिए हो नॉनवेज का। उसके लिए हम एक गाइडलाइन जो है सभी होटल रेस्टोरेंट को जारी करेंगे कि वह अपने यहाँ से नॉनवेज का कोई भी आइटम स्विगी जोमेटो को खास तौर से अयोध्या धाम डिलीवर करने के लिए न दें। वह अयोध्या धाम का अप्रॉक्सीमेट 12 किलोमीटर के इर्द गिर्द होता है, तो वहां पर ऐसी डिलीवरी जो है वह रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, बाकी जो है कोई ऐसा रोक नहीं। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण पर्व को लेकर सड़क सुरक्षा की अनोखी पहल सामने आई है। वडोदरा शहर में मकर संक्रांति और उत्तरायण पर्व को लेकर सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय पहल देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा फतेहगंज सेफ्रॉन टावर के पास दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी नेक मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने स्वयं वाहन चालकों को सेफ्टी नेक पहनाकर सड़क सुरक्षा और सावधानी बरतने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी અને એમના કાર્યકરો હંમેશા કોઈપણ સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં અગ્રેસર હોય છે। આવનારા ઉત્તરાયણનો જ્યારે તહેવાર આવતો હોય, રંગે ચંગે પતંગ રસિયાઓ જ્યારે ઉત્તરાયણ મનાવતા હોય ત્યારે ઘણીવાર ઉત્તરાયણના પતંગની દોરીના કારણે ગળામાં ઈજા થતા ઘણીવાર જીવલેણ ઈજાના કારણે વડોદરામાં દુઃખદ બનાવો બનતા હોય અને એવા બનાવોથી બચવા માટે ભારતીય જનતા યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા એક નેકબેન્ડ, એવા નેકબેન્ડ કે જે મુલાયમ લાગે ગળામાં અને કોઈપણ પ્રકારનું એમને પતંગની દોરી એમના ગળામાં આવે તો પણ એના વચ્ચેનો સીધો સંપર્ક અટવાવી અને કોઈપણ ઈજા થતી બચે એ માટે થઈને આજે નેકબેન્ડનું વિતરણ એ ગઈકાલે આપણા નાયબ युवा मुख्यमंत्री एवा आदरणीय हर्षभाई संघवीजी અને એમના જન્મદિવસ નિમિત્તે આ અભિયાન શરૂ થયું અને હજુ પણ 2-3 દિવસ સુધી આ અભિયાન ચાલુ રહેવાનું છે। આપના માધ્યમથી હું સર્વે યુવાઓને આ બાબતની અપીલ કરું છું કે ઉત્તરાયણની અંદર આવા પ્રકારની ઈજાઓથી બચે માટે નાગરિકોની અંદર આ પ્રકારની જાગૃતિ થાય। પછી એ તાર લગાવવાની વાત હોય કે ગળામાં નેકબેન્ડ પહેરવાની વાત હોય, આનાથી જેટલા પણ માણસોનો જીવ બચે એ માટે હું અપીલ કરું છું। અને કોઈપણ પ્રકારના ચાઇનીઝ દોરા કે કાચના દોરા ઉત્તરાયણમાં પતંગ સમયે ઉપયોગ કરવાથી બચે એ માટેની હું એમને રિક્વેસ્ટ કરું। गुजरात के अरवल्ली जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शामળાજી में 2 दिवसीय शामળાજી उत्सव का भव्य आयोजन हुआ है। गुजरात के अरवल्ली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शामળાજી में 2 दिन का उत्सव का आयोजन खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग और जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पी.सी. बरंडा की अध्यक्षता में किया गया। शामળાજી मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर प्रशस्ति पारीख, जिला विकास अधिकारी दीपेश केडिया, जिला पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह जडेजा, रेजिडेंट ऑफिसर कलेक्टर डी.वी. मकवाणा, मंदिर ट्रस्ट के दूसरे पदाधिकारी, नेता, भक्तगण और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। गुजरात के वडोदरा के हरणी विस्तार में स्थित स्टेपिंग स्टोन्स प्री स्कूल ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए एक शानदार स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन किया। वडोदरा के हरणी के स्टेपिंग स्टोन्स प्री स्कूल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन किया गया था। इस इवेंट में 9 तरह के कॉम्पिटिशन्स शामिल थे, जिसमें ट्रिकल रेस, डांस, एनिमल वॉक रेस, क्रॉस अप रिले रेस, शेप हंट रेस और स्प्रिंट रेस शामिल हैं। इन सभी कॉम्पिटिशन्स में 250 जितने छात्रों ने अपनी उम्र के हिसाब से अपना रोल बखूबी निभाया और अपने टैलेंट और काबिलियत का परिचय दिया। इस प्रोग्राम में स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर जीरल शाह, एडवाइजर निशांत शाह, एसोसिएट डायरेक्टर ईशा शाह, सुपरवाइजर देवयानी पटेल, शिक्षक और अभिभावक उपस्थित थे। स्पोर्ट्स इवेंट के अंत में कंपटीशन में जीतने वाले छात्रों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की गई।
આજરોજ સ્ટેપિંગ સ્ટોન્સ પ્લે સ્કૂલ હરની દ્વારા સમાસાવલી રોડ ખાતે એન્યુઅલ સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટ 2025-26નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં લગભગ 250 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ અલગ ટાઈપની રેસીસ રાખવામાં આવી હતી. સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ સરસ રીતે પ્રેયર, ડ્રિલ ડાન્સ અને અલગ અલગ પરફોર્મન્સીસ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વાલી મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? गुजरात के वडोदरा जिले के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र मामले वडोदरा के सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. वडोदरा जिले के 5 भाजपा विधायक शैलेश मेहता, अक्षय पटेल, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, चैतन्य सिंह झाला और केतन इनामदार द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एक चिट्ठी लिखकर सरकारी अधिकारियों के काम नहीं करने पर सवाल उठाए थे. इस मामले वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. આ જે વિષય છે એ આપના માધ્યમથી મને જાણવા મળ્યો છે અને એકવાર હું અમારા મહાનગરના ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે પણ ચર્ચા કરેલી છે. એમણે કોઈ રજૂઆત આવી કરી હોય તો એમની સાથે એ રજૂઆત મંગાવી અને ત્યારબાદ હું કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી શકું. કોઈ પણ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ હોય તેઓ હંમેશા અધિકારી અને મંત્રીમંડળના તમામ મંત્રીશ્રીઓ, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, એમની સાથે પોતાની લાગણી, પોતાની વેદના
એ હંમેશા વ્યક્ત કરી શકતા હોય છે. અને હું માનું છું કે વડોદરા જિલ્લાની જો આપણે વાત કરીએ તો અધિકારી અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિશ્રીઓ બંને લોકો એકબીજાને ખૂબ સારી રીતે સમન્વય કરી, સંકલન કરી અને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો કે હર મહિને જે સંકલનની બેઠક થતી હોય છે એમાં પણ અમારા તમામ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિશ્રીઓ અહીં આવી અને અધિકારીશ્રીઓ સાથે સંકલન કરી અને લોકોની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવે એ માટેના પ્રયાસ કરતા રહેતા હોય છે. એટલે આ સમગ્ર બાબત મારા માટે તો હું અત્યારે અજાણ છું, પરંતુ જે કોઈ પણ વિષય હશે એ વિષયનો પહેલા ઊંડો અભ્યાસ કરી મારા સાથી મિત્રો સાથે ચર્ચા કરી અને પછી હું કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી શકીશ. હું માનું છું કે કોંગ્રેસના જે લોકસભાના વિપક્ષના નેતા એમને વિદેશથી જે કાગળ આવે એ કાગળ એમને એ લાઈન જ વાંચવાની હોય છે અને એ જ સેમ લાઈન પર પછી એ રાજ્ય સ્તરનું સંગઠન હોય, આમ તો સંગઠન જેવું કશું છે જ નહીં, પરંતુ રાજ્ય સ્તરના એક બે છૂટક કાર્યકર્તા હોય કે જિલ્લા સ્તરના છૂટક કાર્યકર્તા હોય, એમને પણ જ્યોર્જ સોરોસની સ્ક્રિપ્ટ જ વાંચવાની હંમેશા આદત પડી ગઈ હોય છે. એટલે આ બાબતે તો મારે કશું કહેવું નથી હોતું. એમના ચૂંટણી આવે છે એટલે થોડા સક્રિય રહેશે, ચૂંટણી જતી રહેશે, પછી પાછા ફરવા જતા રહેશે थाईलैंड, गोवा, पताया। म्यांमार में फंसे हुए गुजरात और वडोदरा के सभी लोगों को भारत वापस लाने में सफलता मिली है। पिछले एक महीने से 100 से ज्यादा भारतीय नागरिक म्यांमार में फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित वापस लाने की गुहार भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से लगाई गई थी। उन सभी भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत लाने में सफलता मिली है। गुजरात के साथ साथ वडोदरा के गुंजन शाह समेत के सभी लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं और आज रात तक वडोदरा पहुंचेंगे, जिसके चलते परिजनों में खुशी और राहत की लहर है। स्वजनों के सुरक्षित वापस लौटने से परिजनों ने जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया है। मारो छोकरो गुंजन 1 महीनाथी म्यांमाરમાં ફસાયો હતો, તેને લાવવા માટે સરકારશ્રીએ કેતનભાઈ ઇનામદારે, હેમાંગભાઈ જોશીએ તથા બીજા નામી અનામી જેને પણ મદદ કરી છે તેમનું હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। અને ગઈકાલે 4 વાગે તે લોકો દિલ્હીમાં ઉતરી ગયા અને આજે સાંજે 8 વાગે વડોદરા ઇન્ડિગોથી આવવાના છે। તો એ જેમને પણ મદદ કરી છે સર્વેનો હું हृदयपूर्वक आभार मानू छूं। गुजरात के वडोदरा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जानकारी जोन नंबर 1 के डीसीपी डॉक्टर जगदीश चावड़ा ने दी है। वडोदरा के नवायार्ड इलाके की 15 साल की नाबालिग पर दुष्कर्म का गंभीर मामला दर्ज हुआ है। इस मामले हर्षिल आलोक मेघवान और जोंटी परमार को गिरफ्तार कर उनके 3 दिन के पुलिस रिमांड मंजूर किए गए हैं। फतेहगंज पोलीस स्टेशन में गई काले तारीख 8/1/2026 में पोलीस स्टेशन में 64(1), 65(1), 70(2) पोक्सोनी कलम 3A, 4(2), 5G અને 6 मुजब एक बलात्कारनी फरियाद रजिस्टर करवामां आवेली छे। ए अंतर्गत जे फरियाद में जाहिर करवामां आवेलुं छे 2 आरोपी द्वारा 15 वर्षनी एक सगीरा छे जे मूळ उत्तर प्रदेशनी छे અને સગીરા ઉપર આરોપીઓ દ્વારા બળાત્કાર કરવામાં આવેલો। એ બળાત્કાર સંદર્ભે બંને આરોપીને પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા શરૂઆતમાં આરોપી નામે હર્ષિત, જેને રાઉન્ડ અપ કરીને બાદમાં એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યો અને પોલીસની વિવિધ જુદી જુદી ટીમો બનાવી અને અન્ય આરોપીને પણ ગણતરીના કલાકમાં ઝડપી પાડી એને પણ મોડેથી એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે। બંને આરોપી જે છે એમને કોર્ટમાં પ્રોડક્શન કરી આ કામે નામદાર કોર્ટમાં રિમાન્ડ માગતા બંને આરોપીના 3 દિવસના રિમાન્ડ જે છે એ મળ્યા છે। અત્યારે હાલ अलग अलग विविध दिशा में तपास चालू है। बने आरोपी पुलिस कस्टडी में है। पूछपरछ बाद आगळनी तपास जे छे ए करवामां आवशे। बने आरोपी जे छे ए नवायार्डना छे अने बंनेनी उमर आशरे 19-20 वर्षनी उमर जे छे ए जणायेल छे અને તપાસ કરતા બંને આરોપી હાલમાં કોઈ પ્રકારનું
પ્રવૃત્તિ અથવા કોઈ પ્રકારનું કાર્ય કરતા હોય કે નોકરી કરતા હોય એવી કોઈ વિગતો પ્રાપ્ત થઈ નથી. પરંતુ બંને આરોપી જે છે એમાંથી એક આરોપી નામે જોન્ટી જે છે એ ગુનાહિત ભૂતકાળ ધરાવે છે. એના વિરુદ્ધમાં 2 ઓફેન્સ પણ રજીસ્ટર થયેલ છે અને એ જ ગ્રાઉન્ડ જે છે અલગ અલગ બીજા એના આધારે કોર્ટમાં રિમાન્ડ માગીને બંનેના 3 દિવસ રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. એમાં જે આરોપી હર્ષિત છે એ સગીરા જે છે એની સાથે થોડા સમયથી પરિચિતમાં હતો એવું તપાસ દરમિયાન મળેલું છે. પરંતુ સગીરા જે છે 15 દિવસ પહેલાં જ એ યુપીથી અહીંયા આવે છે. એકાદ વખત મળ્યા છે એવી હકીકત મળી છે. પણ બંને આરોપી પૈકી હર્ષિત જે છે એને સગીરાને પોતાના ઘર પાસે બોલાવી એના ઘરથી નજીક આવ્યા પછી અને ફરિયાદમાં જે જાહેર કર્યું છે પ્રમાણે બળજબરીથી એને અંદર લઈ જઈ અને બાદમાં એના બીજા મિત્ર આરોપી જોન્ટીને બોલાવી અને બંને દ્વારા રેપ કરવામાં આવેલો છે એવી હકીકત પોલીસને જાહેર કરતાં બંનેને અટક કર્યા છે. બંને આરોપી જે છે ફરિયાદમાં જે જાહેર કર્યું છે સગીરાએ એ પ્રમાણે આશરે 11:30 થી 12 કલાકથી 2:30 થી 3 વાગ્યા સુધી લગભગ 2 થી 3 સાડા 3 કલાક જેટલા સમયગાળા દરમિયાન એને ઘરમાં આ રીતે ગોંધી રાખી અને આ પ્રકારનું કૃત્ય કર્યું છે એવી ફરિયાદમાં જે છે ઉલ્લેખ કરે છે અથવા એવી જાહેરાત કરે છે. અને એ દિશામાં જ તપાસ કરી અને પછી સગીરા જે છે એનું મેડિકલ તપાસણી કરાવવા માટેની અત્યારે હાલ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. બંને જે दुष्कर्मના આરોપી જે છે એમને એના કામે अरेस्ट કરવામાં આવ્યા છે. गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा के राणावास में दूषित पानी की समस्या से स्थानीय निवासी परेशान हैं। वडोदरा के फतेहपुरा के राणावास में पिछले कई वक्त से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या नहीं सुलझने पर स्थानीय निवासियों ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए मामले का विरोध किया। ફતેપુરા રાણાવાસમાં ઉભો રહ્યો છું. અહીંયા ઘણા 1 મહિના 2 મહિનાથી ગંદુ પાણી, વોટર કોન્ટામિનેશન, ડેમેજ વાળું પાણી અને અળસા નીકળી રહ્યા છે. હમણાં અમે જ્યારે કોર્પોરેટર હતા ત્યારે અહીંયાની નવી લાઈનો પાસ કરાયેલી, વિકલપુરમાં સ્ટમ્પ પાસ કરાયેલો. નવી લાઈનો જ્યારે નાખી હોય ત્યારે પાણી કેમ આવવું? વોટર કોન્ટામિનેશનનો પ્રોબ્લેમ કોર્પોરેશનથી પકડાતો નથી. કોર્પોરેશનના અધિકારીઓથી કોઈ પણ જગ્યા મિસ્ટેક થઈ છે. ડેમેજની લાઈન, પાણી લાઈનમાં ડેમેજ લાઈન મિક્સ કોન્ટામિનેશન થઈ ગયું છે કે આ પાણી આવી રહ્યું છે. વિસ્તારના લોકો કેટલા બીમાર પડ્યા, ભયંકર બીમારી રોગોના ભોગ બનેલા. આજે ગાંધીનગરમાં ટાઇફોઇડના કેસ થયા, ઇન્દોરમાં ગંદા પાણીથી 45 લોકો મરી ગયા. હું સત્તાવાળાને કહેવા માંગુ છું કે આ વિસ્તારના લોકોને શું તમે મારવા બેસેલો? આ વિસ્તારના લોકો ગરીબ છે એટલે આ વડોદરા શહેરના નાગરિક નથી, આ ભારતના નાગરિક નથી, આ ટેક્સ નથી ભરતા. ફતેપુરા રાણાવાસનો એરિયા છે. હવે અમે તો અમારો કોંગ્રેસનો જનતા મેનિફેસ્ટોનો કાર્યક્રમ લઈને 3 દિવસ પહેલાં આવ્યા હતા, અહીંયા બધે ફર્યા. ત્યારે અમને ખ્યાલ આવ્યો કે આ લોકો કેટલી કરુણ અવસ્થામાં જીવી રહ્યા છે. આ ડોળું, જીવાતવાળું, ગંદુ અને ડ્રેનેજ મિશ્રિત પાણી આવે છે. गुजरात के वडोदरा शहर में नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देकर काम करवाए जा रहे हैं। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका के लिए भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर इतना बड़ा सिरदर्द बन गए हैं कि कॉरपोरेशन के हाथ में भी अब नहीं आ रहे हैं। जगह जगह सड़क से लेकर ड्रेनेज तक के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उनके कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा नहीं कर रहे हैं और खामियाजा वडोदरा की जनता को भुगतना पड़ रहा है और सवाल जो है वडोदरा महानगर पालिका पर उठ रहे हैं। ऐसी ही एक सड़क वडोदरा के उत्तर जोन में सालाना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सौरभ कंस्ट्रक्शन को, लेकिन सौरभ कंस्ट्रक्शन है कि काम करने को तैयार नहीं है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ वडोदरा की देना चौकड़ी के आसपास और देना चौकड़ी से लेकर गदा सर्कल तक की सड़क बनाने का काम, वाइडनिंग करने का काम सौरभ बिल्डर्स को दिया गया था, लेकिन सौरभ कंस्ट्रक्शन द्वारा ये काम हाथ में ही नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सौरभ बिल्डर्स को उत्तर जोन में सड़क बनाने का सालाना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और खासकर बरसात की मौसम के बाद समा कैनल खोडियार नगर से दर्शनम 99 होकर सॉलिटेयर लॉन तक TP 46 में 7 से नक्षत्र तक की सड़क डिवाइडर बनाने का काम हरणी TP 1 में
30 मीटर के रास्ते से टंकी तक की सड़क, एटलांटिस विला से पीछे स्वामीनारायण नगर होकर कृष्णा पैलेट तक की सड़क, छाणी में सप्तपदी पार्टी प्लॉट के पीछे रुद्राक्ष से 18 मीटर की सड़क और हरनी गदा सर्कल से दैना चौकड़ी तक वाइडनिंग का काम दिया गया था, लेकिन कॉरपोरेशन की बार बार सूचना के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। जब एक बिल्डर को पूरा जोन दे दिया जाए और सालाना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए और वो कॉन्ट्रैक्टर ही अगर कॉरपोरेशन की बात ना सुने, मनमानी करे, तो क्या हाल होता है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर वाइडनिंग करने का काम था। बरसात के बाद जो सड़क उधड़ गई थी उसे पूरा बनाकर वाइडनिंग करना था, लेकिन आप देखिए यहाँ पर सिर्फ पेच वर्क कर दिया गया है और वो पेच वर्क भी इतना उबड़ खाबड़ है, जगह जगह से अभी भी गड्ढे दिख रहे हैं। ऐसे में पेच वर्क के नाम पर भी किस तरह का काम किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कैसा काम करते हैं ये वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठ रहा है कि अगर इस तरीके का काम हो रहा है और उसके पैसे पास हो रहे हैं तो ये सीधी सीधी वडोदरा के जनता के पैसों की फिजूल खर्ची है। सौरभ बिल्डर्स द्वारा काम नहीं किया गया है, जिसके चलते कॉरपोरेशन द्वारा बार बार सूचना देने के बाद अब नोटिस भी दिया गया है, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद जब कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते हैं तो नोटिस और दंड के सिवाय कॉरपोरेशन के पास भी कोई चारा बचता नहीं है। ये जो काम है काफ़ी लंबा और लाखों रुपए का काम है, लेकिन नहीं किए जाने से लोग तो परेशान हो ही रहे हैं, वडोदरा महानगर पालिका की भी किरकिरी हो रही है। ऐसे में अब सौरभ बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट करने तक की धमकी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दी गई है। आने वाले दिनों में अगर सौरभ बिल्डर ने ये काम नहीं किया तो हो सकता है उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाए। लेकिन कहा जाता है कि जो बिल्डर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, अलग अलग अधिकारियों के साथ और अलग अलग नेताओं के साथ इस तरह साठगांठ बना लेते हैं कि उन पर आंच नहीं आती है। ये जो पूरा नेक्सस है उसे तोड़ना कहीं ना कहीं वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए जरूरी है, ताकि वडोदरा की जनता के पैसों की फिजूल खर्ची ना हो। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट जियो टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।